Beta, good evening everyone. So today we are starting with chapter 1 of Todaro and Smith. Okay. Beta, the name of the chapter is Introducing Economic Development and Global Perspective. तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? हम लोग डेवलपमेंट को ग्लोबली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू इमेजिन व्हाट and how development is related in different parts of the world. Up to explain you this concept of development and to explain you how it is in the global perspective, एक बारी के लिए ये picture देखो. Try to imagine this picture. क्या मिलता है हमें? What do we get out of this picture? This is a picture taken from a village of Africa. ये एक अफ्रीका के विलेज की पिक्चर है और इसको देखते ही जस्ट बाय लुकिंग एट द पिक्चर क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में स्ट्राइक होती हैं? व्हाट थिंग्स स्ट्राइक योर माइंड? यस, इनइक्वालिटी, वेरी गुड, पॉवर्टी, अंडर न्यूट्रिशन एंड मेनी अदर थिंग्स. ये चीजें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आती हैं. Look at another picture. This is picture of a slum area of South Asia. फिर से slum area को देखकर what strikes your mind बेटा? Again, inequality, poverty, sanitation, good, health, है ना? ये सब दिमाग में आता है. So just when we are looking this picture, हम इसको एक global perspective में imagine कर रहे हैं. Now imagine that after these two pictures, if I show you a picture of somewhere people living in Canada or US, तो आपके दिमाग में automatically एक diagram बनता है. You try to go ahead and imagine how things are very different in different regions of the world. How some people are very developed and other people are very underdeveloped. How within a country, एक ही country के अंदर भी there can be slum area also and there can be good societies also. There can be rich also and there can be poor also. तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में स्ट्राइक होता है. Many things strike us. और इसी को जब हम पढ़ते हैं, when we try to analyze how development takes place in the global perspective, that is what this section is about. So in this first section, beta, section 1.1, it says introduction to some of the world's biggest questions. इसमें हमें ये समझना है कि वर्ल्ड में हम किन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या क्वेश्चंस हैं? अब देखते ही हमें ये सारे क्वेश्चंस रियलाइज हुए कि अरे कुछ लोग पुअर क्यों हैं, कुछ लोगों को न्यूट्रिशन कम क्यों मिल रहा है, व्हाई आर पीपल गेटिंग लेस न्यूट्रिशन, व्हाई आर पीपल पुअर, व्हाई इज देयर एन इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल. यही सब हमारे दिमाग में स्ट्राइक हो रहे हैं. सो दोस क्वेश्चंस we want to go ahead and ask today. हमारा aim section 1.1 of this book is to ask these questions. It is asking some of the world's biggest questions today. ठीक है, आओ देखते हैं ये questions. First question बेटा. We will always try to ask ourselves about the living conditions. कि अरे what about the living condition in South Africa? कैसी है वहां पे living condition? What about the overcrowded and unsanitary slums? है ना, जहां पर कोई भी डिसीज आ सकता है, तो उन एरियाज का क्या? सो वेरी रिसेंटली आई वाज वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री जो एक दिल्ली के स्लम एरिया पे थी और वहां पे ऐसा दिखाया गया कि ना बहुत सारा वाटर इट वाज कलेक्टेड एट अ प्लेस. पूरा का पूरा पानी एक जगह पे इकट्ठा हुआ था. इट वाज अ दिल्ली स्लम एरिया दैट वाज शोन. एंड वहां पे देयर वाज ऑल दिस गार्बेज दैट वाज गेटिंग डिस्पोज्ड. एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो, देयर आर पीपल लिविंग ऑल ओवर, बीच में पूरा पानी कलेक्टेड है, देयर इज वाटर कलेक्टेड इन द सेंटर एंड within that you have
all people disposing their garbage also, and this is not getting cleaned. And यहीं पे जो बच्चे रह रहे हैं, the children who are living here, they are playing in this water. Imagine that they are exposing themselves to so many diseases, है ना? कितने ज्यादा डिसीजेस में, अनसैनिटरी कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं. और यही नहीं, द हेल्थ वर्कर्स हु विल गो देयर टू क्लीन द प्लेस, वो भी अपने आप को एक्सपोज करते हैं. They are also exposing themselves to these unsanitary conditions to clean the place. समझ रहे हो बात को? So we want to ask ourselves why some people are living in a luxury जहाँ पे इतना sanitation है, इतना सफाई है, everything is well, and why the other half of the society is living in such unsanitary condition. ऐसी जगहों पे कैसे रह रहे हैं? That is what we want to go ahead and ask ourselves. Let us try to ask these questions, beta. So try to understand, it is not that living conditions are not improving. हमेशा हम ये बोलते हैं ना कि अच्छा इंडिया भी इट विल बिकम दिस मेनी ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, या वर्ल्ड इज ग्रोइंग, ठीक है, जो हम पहले इतना जीडीपी था अब इतना जीडीपी हो गया. सो व्हेनेवर यू विल लुक एट एनी कंट्री, अगर हम किसी भी कंट्री को देखेंगे, वी विल ऑलवेज सी दैट द कंट्री इज सेइंग दैट माय जीडीपी इज इंक्रीजिंग. So if the GDP of each country is increasing, अगर सबका ही GDP बढ़ रहा है, right? And if we connect GDP to development, and we say if there is increasing GDP, तो माने the condition in which people are living is also improving. So if these conditions are improving in different parts of the world, तो फिर भी ऐसा क्यों है that there is so much inequality, so much underdevelopment, so much unsanitary conditions? So this is the answer to it, that sometimes development is slow within a place. कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगी, कुछ ऐसी होंगी जहां पे डेवलपमेंट बहुत स्लो होगी. एंड इट इज अनइवनली, इट इज नॉट एन इवन डेवलपमेंट, है ना? ये तो हमने बहुत कॉमनली चीज देखी है. इसका एक बहुत इजी एग्जांपल समझने के लिए यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर फैमिली. एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से दैट इन दिस फैमिली देयर आर 3 चिल्ड्रन. Let's say that when the first, have you seen those movies जिसमें वो बोलता था कि I think they were most of the अमिताभ बच्चन movies. अमिताभ बच्चन movies में क्या होता था? He was the bigger sibling, सबसे बड़ा भाई होता था वो, and then he could not study because of poor situation in their family, and then he used to do all kind of work but ensure कि उसके जो आगे भाई बहन है वो पढ़ाई करें. ऐसा होता है ना? We have seen this. This is also happening in many families in the real life also. So when there are families, it may happen that with time the income of the family may grow, है ना? तो जो पहले वाले बच्चे होंगे शायद उनको उतना एक्सेस नहीं होगा टू एजुकेशन, टू मनी, जो शायद थर्ड चाइल्ड को हो, right? So there will be growth which can be unevenly within a family. तो अगर एक फैमिली के अंदर ही अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट अनइवन हो सकता है इन दिस एस्पेक्ट कि वन में जस्ट गेट इनफ मनी कि वो कॉलेज करे एंड गेट मैरिड, एंड दूसरे के आने तक शायद इतना पैसा हो दैट द फैमिली इज एबल टू स्पॉन्सर एमबीए डिग्री ऑल्सो एंड उसको बाहर भेज के भी पढ़ा पा रहे हैं. सो व्हेन विद इन अ फैमिली देयर इज सो अनइवन डेवलपमेंट, है ना, देयर इज सो अनइवननेस, तो इमेजिन अ कंट्री, uneven growth can take place. कहीं पे तेज हो सकता है, कहीं पे स्लो हो सकता है. sometimes it can be slow, sometimes it can be fast. So this is what we are talking about. तो अब questions कुछ arise होते हैं बेटा. What are the questions that arise? The first question is, why do living conditions differ drastically for people across different countries and regions? That's the first most important question. Why is it that some people are poor and some people are rich? Why is it that within a country, अगर हम इंडिया की ही बात करें, within a country, some part of the country is rich and some is poor, है ना? Why is it कि within a country you will notice कि कुछ जगहों पे education system बहुत अच्छा और कहीं पे बहुत बुरा है, right? Why is it that different countries grow at different rate? तो एक तो हो गया कि within a country different states are growing differently. जैसे इंडिया में if I compare बिहार and केरला,
दोनों का ग्रोथ रेट अलग होगा. एंड देन इफ आई कंपेयर इंडिया विद यूएस, फिर अलग होगा. सो व्हाई इज इट दैट देयर आर डिफरेंट लिविंग कंडीशंस फॉर डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट रीजन्स? पहला क्वेश्चन तो ये है. द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी हैव इज, why are there disparities in health, nutrition, education, freedom of choice, environment quality, access to market, security, political voice? एक एक करके देखते हैं. Why is there disparity in health? हाँ, अगर हम अभी ही देखें, ठीक है, there are people who may not be able to afford private hospital, है ना, और शायद उनको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही अफोर्ड कर पाए. और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिलना डॉक्टर का इतना इजी नहीं है. You have to wait for weeks. Automatically there is disparity beta. Then compare situation of health in two countries. It is possible कि एक कंट्री में हेल्थ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो और दूसरी कंट्री में completely privatized हो. So where it is government sponsored, everybody will have access to health. Where it is private, आपको पैसा देना पड़ेगा. So there can be disparity in the health facility. Same disparity in nutrition. वही चीज मैंने आपको यहां पे दिखाई. आई शोड यू एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर कि लुक एट द पीपल, राइट, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. बाय लुकिंग एट देम यू विल बी एबल टू टेल दैट दे आर अंडर नरिश्ड, है ना. एजुकेशन. अब एजुकेशन डिस्पैरिटी तो बेटा विद इन फैमिली भी आ जाती है. देयर आर स्टिल फैमिलीज who don't want to educate their daughters beyond a particular age, but they will educate their sons. ऐसा होता है कि women are allowed to get themselves educated कि अच्छा कॉलेज कर लिया ना काफी है, but maybe a son is allowed to do even a PhD. There are families. तो there is disparity within a family. तो imagine disparity in a region, in a country, within countries, education system will vary. Freedom of choice, what you want to choose, है ना. Environmental quality, ये भी disparity है. I remember when I was living in Bangalore for some time. Oh, what beautiful air. मतलब I miss Bangalore. वहां का जो air quality था, I can tell you, you will feel it in yourself. The health will improve. एकदम से you will feel that you are breathing good air. Your skin quality will improve. Beautiful, beautiful air. And इधर आ जाओ, नोएडा साइड, दिल्ली साइड, हाँ, come to Gurgaon side. Just try to see the quality of air. Dust all over, construction all over, हाँ, skin will become dull. होता है. Disparity is there in the environmental quality. Access to market. Market access भी different है, right? Political voice, हाँ, there are countries which are democratic, but there are countries which are completely under the king power. वहां पे आप अपना आवाज नहीं रेज कर सकते हो. You know which countries I am talking about. So it means that there is disparity on so many grounds. तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज अबाउट दिस. यही तो डिस्पैरिटी हमें पढ़ना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड दिस डिस्पैरिटी कि ये डिस्पैरिटी आ क्यों रही है. व्हाई दिस डिस्पैरिटी इज कमिंग, राइट? ठीक है बेटा. देन व्हाई इज आउटपुट पर वर्कर डिफरेंट, माने व्हाई इज प्रोडक्टिविटी डिफरेंट. कौन सा टेक्नोलॉजी एक कंट्री यूज कर रहा है, हाउ इज दैट टेक्नोलॉजी डिफरेंट फॉर द अदर कंट्री. Why is the output between the two countries different, right? Why are the job conditions different? ऐसा क्यों है कि कुछ कंट्रीज में ऑलमोस्ट सब लोगों को फॉर्मल जॉब है और कुछ जगहों पे इतना इनसिक्योर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग. सो व्हाई इज इट दैट इन सम कंट्रीज पीपल आर वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर, रेगुलर सेक्टर, प्रिडिक्टेबल जॉब, जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की तरफ से जॉब सिक्योरिटी मिलता है, यू गेट जॉब सिक्योरिटी स्कीम्स. एंड व्हाई इज इट दैट इन द अदर कंट्री इतना अनसिक्योरिटी है, कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं. हाँ, सो दैट थिंग ऑल्सो नीड्स टू बी अंडरस्टूड. Why are population growing rapidly and why are some on the verge of shrinking? तो बेटा ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बात, है ना. तो वी विल ट्राई टू सी दिस कि कुछ कंट्रीज अभी उस लेवल पे हैं जहां पे आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा होता है.
कैन यू नेम वन कंट्री, कोई भी एक कंट्री बताओ, वेयर पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, इट इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, हाँ सोच के बताना, where population is decreasing and now they are calling nationals from other countries कि आ जाओ भाई हमारी कंट्री में रह लो ताकि पॉपुलेशन बढ़े, because in the long run if population will not increase तो वहां पर वर्कर्स कहां से आएंगे, how will development take place, who will work, who will do production if population starts decreasing? In the long run सारा population तो old age population हो जाएगा, there will be no younger population left. So they are now calling people from other countries कि please come live in our country, हम residentship देते हैं, come and live here. So which are those countries? Give me one name. Huh? So why is it that some population are growing rapidly but others are on the verge of shrinking? कुछ तो बढ़ रही हैं और कुछ कम हो रही हैं. Why public service is so inefficient in some countries? कुछ जगहों पे इतना करप्शन है और कुछ जगहों पे इतना इफेक्टिव पब्लिक सर्विस है. Why is it that there is so much corruption, ineffective public service in some countries? And why is it कि दूसरी countries में the government, the public service and the public organizations are so effective? How can the impact of NGO be measured? कि ठीक है, अब हमने ये तो कर दिया कि wherever there is under development in some aspects, now I am using my NGOs to elevate the level of people. कि ठीक है, मुझे realize हुआ कि there was so much health issues, तो मैंने एक NGO खोला that will take care of the health of people for free. But how will I analyze the impact of the NGO? मैं कैसे समझूं कि NGO का कितना impact है? How will I analyze that impact? That has to be understood. Why are there great divergence in countries? Does history matter? तो we know कि कुछ countries में industrial revolution came way early, बहुत पहले ही industrial revolution आ गया था, way early, है ना. कुछ countries बेचारी बहुत slow थी. अच्छा, try to understand when these countries जहां पे शुरू में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंग्लैंड एंड ऑल, हाँ, when they started growing उन्होंने बहुत immense factories बनाई, हाँ, they caused a lot of pollution, ठीक है, and they hampered the environment also. But उस टाइम पे these countries like India and other countries, they had not grown. Now when we are growing, जब ये वाला countries grow कर रही हैं, they want to open up these factories and do production at large scale. So now there are other global issues also. Irony, there are other global issues also. Ki, you're not allowed to do so much pollution. You're not allowed to hamper the environment. Of course, one should not hamper the environment. But these countries have already grown that part. समझ रहे हो? So we need to understand that aspect also. ठीक है. तो here we are saying why is there great divergence in countries? ऐसा क्यों है कि उनका जो growth rate होगा country A का और country B का that will diverge? अच्छा, सोलो मॉडल में हम पढ़ेंगे कि what is conditional convergence, कब converge करता है growth rate. We will talk about that. But why is there great divergence in the countries? And does their history matter? क्या उनका growth rate अलग अलग है तो does history play a role in it? We understand growth rate is different, but does history play a role in it? Okay. Now, to end this section 1.1, I want to go ahead and I want to highlight the definition of development. Development is the process of improving the quality of all human life and capability by raising the level of living, self-esteem and freedom. तो क्या है development? किसको बोलेंगे development? You are not, देखो, in my orientation session only, I explained to you that there is a difference between growth and development. Let's try to see the difference better. तो एक बहुत एग्जाम्पल दोबारा देती हूँ कि when your relatives visit you, हाँ, suppose you were 4-year-old, आपके एक रिलेटिव थे जो इंग्लैंड में रहते थे, they came to you when you were 4-year-old
and now they're coming to you when you're 24 years old. So just by looking at you, they will say, wow, you have grown so much. Growth is जो ऊपर से दिखे, जैसे income बढ़ना, growth. Development is overall. Then slowly they will realize कि अरे वाह, you have so good culture. Wow, you have nice etiquettes. Wow, you also know some dance. Wow, you know art, you know Python. Wow, you are pursuing PhD in economics. Wow, you are becoming an Indian Economic Service Officer. Development. Development is overall. Growth is in terms of GDP, जो ऊपर से दिखता है. So development is when we are able to improve the quality of human lives. Quality is affected by many things. एक कंट्री में जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता, whether you get justice or not, what is the air quality of the country, what is the health facilities in the country, education in the country, sanitation in the country, how effective is the government policies, whether you have political opinion or not. Quality तो बहुत चीजों पे is impacted by many things. It is affected by many things. तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करना है. द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कैसे लोग रह रहे हैं, हाउ पीपल आर लिविंग, आई वांट टू इंप्रूव दैट. एंड कैपेबिलिटीज. अच्छा, इस पे देयर इज फुल यूनिट 4. आई विल टॉक अबाउट इट, विच इज अमर्त्य सेन, पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन. उसमें हम कैपेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे. How will we improve the quality and capability of a person? By raising his standard of living. Of course, उसका income बढ़ाओ, उसको education दो, उसका health बढ़ाओ, but also by improving their self-esteem, by giving them more freedom. Just for example, let's consider two girls, girl 1, girl 2. I am telling you this. I have seen in my life. मैंने खुद देखा है ये बहुत बारी होते हुए. This girl, she lives in a very rich house. This girl lives in a ठीक-ठाक middle class house. This can be any typical person like me. ठीक है? We are born and brought up in middle class families, है ना? अच्छा, then I have seen, I am telling you, I have seen it in my group, ठीक है? अच्छा, then this girl, she was also sent to college, I was also sent to college, no problem. But just after college, the parents were very demanding कि नहीं, no more studies. You can do MA if you want from open, but we are looking for someone for marriage. No love marriage, no this, no that, no saying. वो सब कुछ था. You are given a car, ठीक है? You're given money, but you don't have any say. Here, on the other hand, not given any car, decent money, not a lot of money, but you have say. When you want to get married, to whom you want to get married, what you want to study, how much you want to study, where you want to work, where will you want to live? I would want to always live here, where I have a decision making involved, where I can live life on my conditions. So even if I improve your standard of living, I raise your living standard, but I don't give you freedom to decide how to lead your life. तो फिर तो development नहीं आया. Then development is not there. So development is not just money. Remember, development is raising the living standard, improving the mentality of people, improving the way they think, increasing the self-esteem of people, giving them freedom. तब आया development. समझे? ठीक है बेटा. So this is section 1.1. I hope you found the section to be interesting. I will start with 1.2 in the next class. Read this chapter on your own also and try to get in-depth meaning of each line. ठीक है जी. Okay, thank you बेटा.